प्रेगनेंसी की लास्ट की स्टेज जब आपको पता है आपको हॉस्पिटल किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज रहे और आप यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास वो सारे एसेंशियल है जो आपको अपने लिए, अपने बेबी या अपने पार्टनर के लिए चाहिए हो सकते हैं हॉस्पिटल में। आज की वीडियो पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सारे एसेंशियल जो मैंने पैक करे थे अपने हॉस्पिटल बैग में एंड द वे आई डिड इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So for the hospital मैंने दो बैग बनाए थे। One is my baby bag and one is for me and for my husband, जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी थी जो मुझे प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी ड्यूरिंग माई टाइम इन हॉस्पिटल चाहिए हो सकती है। So let's get started with baby stuff first. इसमें the first thing is मैंने इसमें एक बैग बनाया था जिसके अंदर बेबी के टॉवल, मसलिन क्लॉथ, बेबी की hat और mittens पैक करे थे। Now first thing is make it easy for my husband. I have organized in a way कि मैंने इस सब को जिप लॉक में पैक किया था and I have written it down कि इस जिप लॉक में क्या मैंने डाला है ताकि whenever it needed my husband or anybody from my family just grab that from the bag and it's easy for them to know. I wanted to use my own टावल। ये वैसे ही बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है। मैंने इसको प्री वॉश कर लिया था हॉस्पिटल में फॉर द फर्स्ट टाइम जब बेबी को बाथ देना था। आई वांटेड टू मेक श्योर उसके लिए बहुत सॉफ्ट कोई स्मूथ सी चीज़ मैं यूज़ करूँ। That's the one I used and I had got the muslin clothes. Now this is from Amazon. I can again attach the link below in the description box. This is the big muslin cloth. I had got it and I have used. This is pretty huge actually and the fabric is so soft, so nice. मैंने ये use किया था to wrap Arshya around it. Basically what happened, when baby is inside your vomit, they are tight, they are cozy, right? Once they are out, they still want to have a same feel. They want their body to be squeezed in. They want that warm. तो उसमें अगर आप स्वेडल करेंगे बेबी को, इट्स वेरी हेल्पफुल टू देम। इट विल कीप योर बेबी काम और बेबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। That's what I really recommend. For that extra warm, I would recommend keep mittens and hats handy. मेरे केस में the onesie I selected उसमें already socks बनी हुई थी तो I need not to take anything for Arshya extra. But if in case आपने कुछ ऐसी ड्रेस चूज़ करी है जिसके अंदर socks का पेयर socks नहीं बनी हुई है, do keep socks as well for the baby, just to give them that extra comfort, coziness. After all, that's all for the baby, right? हॉस्पिटल रिकॉर्ड फाइल मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टेस्ट हुए थे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मिला था, उसकी फ़ाइल बनाई हुई थी एंड आई टुक इट विद मी टू द हॉस्पिटल एंड अलॉन्ग विद अ पेन। जस्ट अ टिप, इफ़ इन केस आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, आई नो वी ऑल लुक फॉर अ पेन एट द लास्ट मिनट, जस्ट कीप वन पेन हैंडी, इट्स सेव and it's hassle free basically. Next item is this diaper caddy जिसके अंदर मैंने few items रखे थे regarding baby को जब change करना है diapers, जिसके अंदर few newborn size diapers मैंने रखे थे। Oh my god, look at these small tiny diapers, कितनी cute लगते हैं ये छोटे छोटे bumps पे। Oh my god, that's so adorable. Then I have a body wash and the cream for baby, just a travel size because anyhow हमें एक दिन ही रहना था हॉस्पिटल में। I have a diaper cream for baby bumps if in case baby get rash or baby bumps don't like my diapers. Then I have breast pads. These are the shields for my breast if in case I need these in the hospital. And another thing, just to be on the safer side, मैंने nipple butter रखा था for myself if in case my nipple gets sore or nipple get cracked, which is rarely a case in initial days, but just to be on the safer side, nipple butter was there in my diaper caddy. Another thing was the travel size of laundry detergent. Now accident do happens, right? Especially with the baby, so it could be anything. तो मैंने एक travel size detergent रखा था just in case we need to wash anything. We need not to rush back to home to grab a new piece. Instead, we can just wash in the hospital. So these are few items in the diaper caddy. Next item is the wet wipes. आपको wet wipes बहुत काम आएंगे जब भी आप बेबी का initial diapers change करेंगे. You wanna use
baby soft wet wipes to clean them. एक suggestion है यहाँ पे, please don't use wet cloth to dry your baby bumps or to clean them. Babies की skin वैसे ही बहुत sensitive होती है और definitely you don't want to use anything harsh on those little bumps. Next item is baby swaddlers. मेरे केस में I was so excited. मैंने 2 swaddlers अपने आप बनाए थे, one for baby girl, one for baby boy. Baby girl के लिए ये मेरे pinkish shade में बनाया था. This is a reversible flannel fabric. और baby boy के लिए मैंने plains का with a check. This one I chose and I actually end up using both even though मेरी baby girl हुई है. I would recommend buy any blanket जो warm हो और especially lightweight हो जिसमें आप baby को wrap कर सके. Don't buy something heavy quilt or something like that for your baby. You want to give a room to your baby कि वो breathe कर सके. और अगर आप भी handy है just like me, know little bit of stitching, so why don't you try और आप भी थोड़ा stitch करिए अपनी baby के लिए blankets. तो नेक्स्ट मैंने रेडी किया था ये चीता प्रिंट onesie. हाउ अडोरेबल इट इज़. वन रिकमेंडेशन हेयर इज़ आप कुछ भी खरीदे आप मेक श्योर करिए कि वो उसके आगे या तो बटन्स है या जिप है. दैट विल बी वे इजी फॉर यू. आप बेबी को ईज़िली पहना पाएंगे इंस्टेड कि उसके सामने कुछ भी नहीं है और आप उसको उसकी गर्दन से पहनाए. वो बहुत अनईजी हो जाता है स्पेशली बच्चों के लिए एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू चेंज दोज क्लोथ्स. बट दीज आर सिंपल, these are so simple. All you have to do is open these buttons और tada, easy to work with. अब मेरी जो बेबी हुई है वो near around Valentine Day हुई है and when I was shopping for her I fall in love with this outfit. Look at how cute is this. and ये उसकी पहले दिन की ड्रेस है and it has all the hearts and love written on it. Oh my god, that again it has snaps on it, so it was very easy for us. That's all from the baby stuff. अब बात करते हैं mom's essential की. So the very first item that comes into my hand is पोस्ट डिलीवरी किट. इसके अंदर वो सारे एसेंशियल है जो पोस्ट डिलीवरी मैंने यूज़ करे, विच इंक्लूड पैड्स, a pair of socks to keep myself warm, mesh pants are nothing but a large underpants जो आप यूज़ करना चाहेंगे पोस्ट डिलीवरी, एंड नर्सिंग ब्रा. मोर अबाउट दी प्रोडक्ट जो मैंने पोस्ट डिलीवरी यूज़ करे, आई हैव मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. यू मे रेफर टू दैट वीडियो इन द लिंक बिलो. few items are for the mom जो आपको लेबर रूम में चाहिए होंगे. Now for me, I have make sure I have all the things which would make me comfortable and relaxed during that labor process. जितना आप उस समय relax होंगे, comfortable होंगे, oxytocin is gonna release in your body which will make the labor quite easy. And for that, to start with the first essential, I would say get a headband. अगर आपके बाल भी मेरी तरह लंबे हैं, so you get my pain regardless हमने बाल बांधे हो, but there are always something that falling on our face. I bought this cotton headband or bandana and I wrapped it around my head. And beside, हमें advice किया जाता है post delivery to cover our head, right? This was very effective for the same thing. Instead of wearing the woolen hat, आप इसको continue कर सकते हैं and I just go for the headband that suits you. Two things I'm gonna talk about is chapstick and the body butter. So with the chapstick, I have used it randomly again and again to keep my lips hydrated. Really recommend it. And the next thing is the body butter. Now I got this body butter because of the fragrance. The fragrance was so good. Okay, sorry, I was distracted. Now, during the delivery time, जब मेरा focus, I was so tired, so exhausted, मेरा focus यहाँ वहाँ जा रहा था. I used this to smell it, to calm myself, to relax myself before every contraction. And trust me, ladies, this trick work wonders. Try this, and after post delivery, you can even use that body butter on your skin क्योंकि आपकी skin वैसे ही बहुत dry हो जाती है. तो it work wonders for 2 reasons. Keep it there.
ये मेरा टॉयलेटरी बैग है एंड आई टुक इट एज इट इज़। इसके अंदर शावर जेल, फेस वॉश, लिस्ट्रीन, टूथब्रश, आर ब्रशेज, एनीथिंग रिलेटेड टू टॉयलेटरी आई मे नीड टू यूज़। आई टुक इट टू द हॉस्पिटल विद मी, इवन दो मैंने हॉस्पिटल में एक दिन रहना था, पर आई वॉन्टेड टू मेक श्योर इफ़ इन केस डिलीवरी के बाद मुझे बात लेना है तो आई हैव ऑल दोज थिंग्स एसेंशियल्स रेडी फॉर मी। एंड वन मोर थिंग, आई मेक श्योर कि मैं इसमें अपने हस्बैंड के लिए भी ब्रश और उनका हेयर जेल लेके कैरी करूँ। आफ्टर ऑल that's the another perk of being an awesome wife. Thank you very much. And yeah, I'm glad we had it handy, ताकि it save a trip for my husband too. He took a shower there itself. Oh, one more thing, keep lot of headbands ready for you in the delivery. You want to keep an extra pair if in case you lose any there. You always have an extra spare one to use it. And I again keep one brush handy. Seems like it's time for me to brush my hairs. Keep one hairbrush ready as well. You may want to comb your hairs time to time if time permits or for the photo shoot. Next item is the sipper. ये right next to my table था and I have filled up with the water and time to time मैंने post delivery में इसमें juice भी fill किया है. If you are a person just like me जिसको बहुत प्यास लगती है, have something with you handy, sipper या bottle to keep yourself hydrated throughout that process. So next item is the snacks. मैंने ये पैक किया था exclusively just for my husband because I know the delivery could be a long process and it will be equally tiring for him. उस टाइम पे when he was extremely losing his energy, we don't want कि he wanted to stay with me at the same time. वो बहुत भूखे थे, so I really don't want कि he step out, go and eat something. I kept couple of snacks for him. I kept this energy bars, nuts, and I have few chips available with me. I kept few chips for him as well just in case he want to eat something without leaving my side. So I really recommend have some kind of snacks handy with you that even you can consume if you are hungry, maybe post delivery, because post delivery your body is so exhausted, you are so tired, at the same time you are so hungry, you want to consume something. Maybe you are having baby at the odd time just like me, midnight, सब कुछ बंद था, I couldn't find anything. So what works for me is this energy bar. So पोस्ट डिलीवरी यू वांट टू हैव समथिंग जो बहुत कंफर्टेबल हो, लाइट हो. मैं अपने साथ लेके गई थी रोप. दिस वाज वे सिंपल फॉर मी नर्सिंग के लिए या फिर फॉर द डॉक्टर टू कम एंड चेकअप इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग माई शर्ट. बिसाइड you are in a hospital but you are different than any other patients there, right? You deliver a baby, you want to enjoy that moment, you want to celebrate it. There are so many people who are coming to visit you, आपको विश करने आएंगे उस टाइम पे. You want to make sure you look good, you dress up nice, so buy yourself a fancy robe provided it's comfortable for you, and you never know, you end up just like me doing a photo shoot in the robe. So next item is the homecoming outfit. Hospital में you may just want to wear something comfortable like a gown or the robe. घर आने के लिए मैंने comfortable clothing अपने लिए रखी हुई थी. I prefer to choose a legging and the tank top just because it was so lightweight and it was very breathable for me. I was not ready to wear something like a jeans so tight. So and beside I wanted to look good with my baby when I'm coming home. Again, do keep one outfit for you for the homecoming and for capturing all those beautiful moments with the baby. So the next item is the nursing pillow. I know it looked giant, but trust me ladies, this is the best thing I have bought for myself. मैं nursing pillow अपना hospital लेके गई थी because I wanted to use it from day one. This is way better than using any pillow under the baby. Breastfeeding support में it's very good. Even when my husband hold the baby, he has used this. जब lactation consultant आ रहे थे, they were using too many pillows to help me, to guide me how to do a breastfeeding, right? I wasn't comfortable having too many pillows around me. Instead, I choose a breastfeeding pillow. I would say here कि आप अपने hospital से ज़रूर बात करिए कि
कुछ आइटम्स है क्या वो आपको देते हैं, दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ अ चेकलिस्ट, उसमें देखिए आपको क्या पैक करना चाहिए क्या पैक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ आइटम्स ऑलरेडी हॉस्पिटल आपको दे रहा है तो यू मे नीड नॉट टू पैक दोज, राइट, दैट सेव स्पेस फॉर यू। नेक्स्ट इज़ द रिलैक्सेशन। मैं एडवाइस करूँगी आप कुछ सेंटेड परफ्यूम कैंडल्स अपने साथ लेके जा सकते हैं, या फिर यू कैन लोड रिलैक्सेशन म्यूजिक इन योर फोन जस्ट लाइक वी डिड इट। इट वॉज वेरी हेल्पफुल स्पेशली फॉर मी एंड माई हस्बैंड एज वेल, ताकि वो भी स्ट्रेसफुल नहीं हुए। एंड इफ़ यू आर इनटू अ फोटोग्राफी आई वुड से टेक कैमरा विथ यू, tripod with you, and don't forget to take charger of any kind for your camera, for your mobile, maybe for your husband. It could be in any form of charger, you know. Say in my case this was a tea bag. Last advice is आप अपने घर से एक्स्ट्रा सेट ऑफ पिलोज और एक क्विल ज़रूर लेके जाइए। नाउ दिस कुड बी फॉर द पर्सन हु इज स्टेइंग विद यू ओवरनाइट, दैट कुड बी योर हस्बैंड और दैट कुड बी एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर। मैं जब हॉस्पिटल गई आई वॉजन कम्फर्टेबल विद द पिलो जो हॉस्पिटल ने दिए थे, दे वर टू स्लिम, वॉजन कम्फर्टेबल इनफ। सो जस्ट टू फील लाइक अ होम मैंने अपने घर के पिलोज यूज़ करे थे हॉस्पिटल में। सेम लाइक इट गोज़, आई वॉन्टेड टू मेक श्योर मेरे विजिटर, मेरी ममा वहाँ पे थी, वो कंफर्टेबल हो, तो वी हैव दोज एक्स्ट्रा पिलोज रेडी इन द हॉस्पिटल फॉर अस। दीज आर द एसेंशियल जो मेरे बहुत काम आए ड्यूरिंग दोज डे इन द हॉस्पिटल। अगर आपके कुछ एसेंशियल्स है जो मैंने कवर नहीं करे पर आपके बहुत काम आए ममाज, प्लीज़ फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, ताकि हमारी सून टू बी मॉम्स आपकी एडवाइस पढ़ सके थ्रू दोज कमेंट्स एंड बी रेडी एंड गेट देयर हॉस्पिटल बैग रेडी एज वेल। एंड अगेन दिस वीडियो इज बीइंग मेड बाय मी विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग every mom in the world together and share their experience and get each other advice. So let's stay connected, stay tuned till we meet next time. A big hug from one mom to another mom.